Hey everyone. Hello guys, we are live from ESAL Triple IT Sonipat and we welcome you to our flagship event Talk with Alumni. First of all, हम लोग शुरू करेंगे एक स्मॉल इंट्रो अबाउट आर ESAL. सो 2019 में हमारे तीन को फाउंडर्स ने सोचा कि एक ऐसा विजन होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें और स्टार्टअप कल्चर जो इंडिया में आ रहा है उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके. तो इस तरीके से 2019 में हमारे तीन को फाउंडर्स ने मिलके दे फाउंडेड ई सेल एट ट्रिपल आई टी सोनीपत. आर करंट प्रेसिडेंट मिस्टर रवि सरावत वॉज वन ऑफ देम. सिंस द लास्ट ईयर वी हैव बीन कंडक्टिंग दिस इवेंट टॉक विद एल्यूमनाई, जिसमें हम अपने कॉलेज से प्लेस्ड सक्सेसफुल एल्यूमनाइज को बुलाते हैं और उनके साथ एक स्मॉल चिट सेट सेशन करते हैं जिसमें जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, हम लोगों के, और स्मॉल चिट चैट्स जो हम अपने सीनियर से करना चाहते हैं, जो हमारी जो ड्रीम कंपनीज है उनमें प्लेस्ड हैं. फाइनली द वेट इज ओवर. इस इवेंट So, के लिए वी हैव पुट आर soul and blood. So let me welcome you all finally to the event. This is me, Aditya Rawat, and my partner Pratik Gupta, and we'll be your host for today's event. so Now I'd like to audience, welcome. सबने अपनी कोई ना कोई ड्रीम कंपनी सोची होगी जहाँ पे वो 4 साल बाद अपने आप को देखना चाहते हैं. जहाँ तक पहुँचने के लिए शायद वो आकाश पाताल एक कर दे, पर आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? वन आंसर है इसकी मेहनत करके. पर मेहनत किस डायरेक्शन में करें, मेहनत कैसे करें? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वी आर हियर टू टेक यू टू द जर्नी टू सक्सेस. बट विथ whom? So a round of applause for our honored guest, Miss Pragati Kushwaha and Miss Pragya Jain. Hello, ma'am. Hi everyone. We'll Good Hello. first evening, begin ma'am. with a short introduction of our guests. This is Miss Pragati Kushwaha from batch 2017 of Triple IT Sonipat. And she's an expert in machine learning, Android development, data structure, CSS, and much more. These are just the part of the icebergs that are visible. She's a software engineer at Microsoft, which is a dream company, I think, of all of you guys attending us live on YouTube. And she's a former intern at Zebel Technologies Private Limited. And our next guest is Miss Pragya Jain. It's is placed in Goldman Sachs, and it's batch 2017 from Triple IT Sonipat. Its expertise are C++, data structure and algorithm, SQL, Django, and much more. अगर हम सारे लिख देते तो शायद स्लाइड पे पूरे आते भी नहीं, इतने सारे एक्सपर्टीज थे उन पे. एंड एक्सपीरियंस, she also had former intern at delivery. So we welcome you all, ma'am. So let the fun begin. Now we'll be asking the questions to our honorable guests, and you all will surely enjoy this event. And audience, be ready with your questions, as at last we would definitely be taking your questions. Okay, ma'am. So we'll begin the talk show. सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे द पार्ट ऑफ लाइफ वी हैव ऑल बीइंग ड्रीम और ड्रीम्ड ऑफ द कॉलेज लाइफ इन ड्यू टू ऑनलाइन वी आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इवन ये इवेंट भी हम लोग घर से बैठ के कर रहे हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ. विच ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ वुड यू लव टू लिव अगेन? Um, I would start with. I mean, again, though I am not sure about, but I definitely want to live my final year, even just once. As we all know, that final year is a very special year for everyone of their college life. Like if you got placed, and it is all just about fun and making memories for the life. But since we even didn't got a chance to live it once, so I'll definitely want to live it at least once.
if I ever get a chance. Yeah, Yeah. Ma'am, that's great. There are only a few number of people who want to live their placement year once again, and Pragya Jain ma'am is one of them. yes, Yeah, ma'am. definitely. And we are just beginning with it, and some have just gone with it. So, do you want to कि आपका कॉलेज लाइफ कैसे गया? मतलब मैं Yeah, definitely. I would like to like brief out in very small things. Like college life is very special for everyone, and if it, you should make it special. You should make efforts to make it special. Since in this like session we have to like people from all the years, so I would like start my first year is like something you should enjoy, you should explore yourself, like indulge yourself in more and more activities you can, like see what is good for you, what are your interests, take part in different activities, even if you don't know that like what to do, just go and like take part in that. I can recall during my college life, like there were few events related to freshers when we joined the college. So we had one caricature drawing competition. I was good at drawing, but I never draw a caricature before. So instead of thinking what would be the outcome, like how would I do, like I just went there and I participated, and it turned out very good for me. I even like went for the next round. So it's just for congratulations, the ma'am. first. Whose caricature did you draw, man? Was it some of your teachers? Very good question. No, I drew caricature of Mr. Narendra Modi, no, famous Oh wow, personality. wow. Oh, So I would just like advise you, if you're in your first year, just explore more and more of yourself, participate in more and more activities, make connections around yourself, which will help you further in your college life, and also do keep hold of subjects, like important subjects which comes along with the semester. I guess you guys have data structures in second semester only. Yes. yes, ma'am. So yeah, like within curricular activities, keep hold on that part also. Yeah, So that's a great advice. And Pragati yeah. ma'am, can we have a gist of your college life too? हुँ, मेरा कॉलेज लाइफ भी जैसा कि प्रज्ञा ने कहा कि बहुत अच्छा था मतलब अच्छा लगा कि हम सबसे पहले कि हमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए स्टार्टिंग वाले ईयर्स में कि हमने ताकि हमें मतलब पता चल सके कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। उसमें से फिर हम अपने सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकें। तो अ, मैं भी फोर्थ ईयर ही उस दोबारा करना चाहती हूँ क्योंकि उस वक़्त जब प्लेसमेंट हो वाह गया था और हमने वाह। काफ़ी टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ एन्जॉय किया था। मतलब फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड तक हमने बिल्कुल भी इतना क्योंकि हम अपने मोस्टली अपने क्लब्स उनमें बिज़ी रहते थे बट इतना हमने फ्रेंडशिप के लिए टाइम्स नहीं दिया था। तो आई थिंक फोर्थ ईयर जो था हमारे लिए वो हमें नहीं मिला 1 महीना ही था बट तो भी Yeah. हमने इसे 1 साल की तरह ही जिया। हुँ। मैम, सो आप एक नोटोरियस किड थी, मतलब बहुत सारी शैतानी, या आप एकदम हुँ। शांत? मैं तो वैसे इतनी शैतानी नहीं थी, शांत ही थी वैसे, पर मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करती, न्यू-न्यू फ्रेंड सर्कल बनाती, उनमें इंटरैक्ट करती, एक्टिव रहती। वो चीज़ आई थिंक मैंने मिस की है अपने कॉलेज टाइम पे कि केवल एक ही फ़ोकस लेके हमने टारगेट किया मतलब पर उसके अराउंड भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। Oh, Yeah, that's a great advice. so we are moving on to our second question. मैम, यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि मैम हम अपने सीनियर्स को सर या मैम करके बुलाते हैं। मैम, Mhm. सो व्हाट आप भी अपने सीनियर्स को बुलाते थे? क्या Yeah, ऐसा कल्चर था we आपके समय पे? Yes, yes, it was the same. When I still remember, we used to have like guidance sessions kind of from our seniors at in our hostels at night. So in them, they used to tell us all the gyan, what should we do and what shouldn't we. The first thing which everyone would like say, you have to address your senior with sir or ma'am. You have to address your senior with sir or ma'am. No, but it was good also. You don't have to like give a second thought. Ki, Are, what you have to say to this person? You say di or whatever. It's like unanimously you have to say sir or ma'am. So
looking to a positive side, it's good. सो आप लोगों ने भी अपने जूनियर्स को फोर्स किया होगा फिर तो? No. I mean, you don't have to force anyone. They'll automatically say you sir or ma'am. And if they aren't saying it, so it's okay. I was not offended. Maybe some people were that why they are not addressing them as ma'am or not, like. But I was never offended. But if they're saying you, addressing you by name, it's okay. They So can. the first time you heard that you are having a guidance session from your seniors, that too in hostel, that too at night. Yeah. So did you have that goosebumps kind of thing, like ragging होगी या क्या होगा, or something like that? अगर कुछ गलत हो गया तो या अगर याद ऑब्वियसली कुछ भी होता है स्टार्टिंग में, तो यू आर नर्वस अबाउट दैट कि क्या होगा, कैसे होगा. बट द गुड पार्ट वाज ठीक है, इट वाज द ग्रुप एक्टिविटी, नो. यू द बकेट इन विच यू आर, देयर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन द सेम बोट, तो यू आर फाइन. ओके, सबके साथ जो होगा हमारे साथ भी वही हो जाएगा. That's a great team spirits example. यस. ओके. सो नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि कुछ ऐसा है दीज 4 years ऑफ कॉलेज लाइफ जो आप रिग्रेट करते हो, लाइक यू डिडंट जॉइन अ क्लब, या फिर आपने कोई एक्टिविटी ज्वाइन नहीं की, या फिर कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा कुछ? हाँ, डेफिनेटली. मतलब आई हैव फन, लाइक कि आई शुड हैव लाइक पार्टिसिपेटेड मोर इन स्पोर्ट्स, नो. Like I should have been a part of one sport team, either chess or like basketball. I mean, I could have done this or yoga, but I was not able to manage time accordingly, so I just dropped out that. So ओके. पर मैम प्रगति मैम, क्या आपका भी योगा और स्पोर्ट्स ऐसे किसी फील्ड में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था? मेरा वैसे हाँ स्पोर्ट्स में था, बास्केटबॉल में. मैं चाहती थी कि हर रोज में टाइम निकालूं, पर मैं वही मैनेज नहीं कर पाई. इसके अलावा ये था कि मतलब कुछ मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था, बट मैं उसको थोड़ा टाइम तक ही कर पाई. वो जो मतलब आपका इंटरेस्ट होता है, पैशन होता है, वो आपको मतलब थोड़ा करना चाहिए. तो वो आई थिंक मैं मिस सो करती हूँ, तो मैंने इस पे आप हम लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, लाइक जो चीजें आपने मिस की, शुड वी अटेंड देम, और शुड वी फोकस मोर ऑन दीज स्कॉलिस्टिक टाइप ऑफ थिंग्स? मतलब मैं इसलिए बोली कि एक्टिंग एक मेरी हॉबी थी, आपकी हो सकता है कुछ और हो, म्यूजिक हो, कुछ और भी हो, या फिर स्पोर्ट्स में हो. तो आप ऐसे मत करो कि अपने टाइप को पूरा एक बाउंड कर लो कि बस मुझे केवल यहाँ पर हूँ तो केवल कोडिंग कोडिंग कर, मतलब केवल एक पर्टिकुलर ही कुछ चीज़ करनी है. आपको समटाइम ये होता है कि आपको अपना मूड फ्रेश करना है, तो एटलीस्ट आपके पास है कि आप अपने जो भी आपकी हॉबी है उसमें थोड़ा टाइम स्पेंड करो, जस्ट फॉर चिल. ऐसा नहीं हो कि आप अपना प्रेशर मतलब केवल जो आप एक ही चीज पे टारगेट करते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है आपको. तो आप यदि अपने प्रेशर को मेंटेन करोगे, मतलब और भी चीजों में एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा सा इन्वॉल्व होगे ताकि अपने मूड को फ्रेश कर पाओ, उतना करना चाहिए. डेफिनेटली डेफिनेटली. यस मैम. मैम कोई आपका ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप यू लाइक द मोस्ट एंड जिससे आप बहुत नफरत रहती हो, कि मतलब आप उससे दोबारा नहीं पढ़ना चाहती हैं, या तो कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में? आई गेस सारे सब्जेक्ट्स ही मैम को पसंद थे, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहे. यार मम्मी चुप हो जाओ प्लीज. मम्मी मुझे चुप. मुझे जो सबसे अच्छा था वो डेटा स्ट्रक्चर पसंद था, डेटा Actually, I स्ट्रक्चर guess एंड I'm एल्गोरिथम. facing तो मुझे some नहीं. internet issues, not able to hear you guys clearly. मैम आर यू हियर? Now There's ma'am, some network issue. She the would be last joining question us. of this fun filled chit chat part of the session. What are your views on the topic girls in engineering? मैम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, हमारी छोरी छोरियों से कम है क्या? मैम आप एक वुमेन एम्पावरमेंट की एपिटोम है, आप बहुत सारे गर्ल्स को इंस्पायर कर सकते हैं. हाँ, तो मैं मोस्टली यदि मैं बोलूँ तो एक कॉलेज में ये माहौल होता है कि बॉयज़ ज़्यादा होते हैं और बॉयज़ ही कोडिंग में अच्छे होते हैं. यदि आप ये कर रहे हैं क्या कोडशिप की भी रेटिंग देखो तो आपको गर्ल्स का जो रेटिंग होगी वो अपने कॉलेज में शायद ही
50 मतलब मोस्टली मैंने नहीं देखा कि 50 के बाद ही होती थी, क्योंकि एक जो होता है यूनिटी वाली चीज़ होती है कि बॉयज़ मतलब एक मिलके यूनिटी करके वो कोडिंग कर रहे हैं साथ में, पर गर्ल्स में ऐसा एनवायरनमेंट ही क्रिएट नहीं हो पाता है क्योंकि सबका अलग-अलग। तो मैं उनको बोलूँगी कि यदि आप ग्रुप में करोगे, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जस्ट आप हो सकता है कि आप कुछ गर्ल्स और बॉयज़ का भी ग्रुप बनाओ, बट एट लीस्ट मतलब आप जब आप यूनिटी से करते हो अब तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपके लिए भी हेल्पफुल है और पूरे ग्रुप के लिए भी हेल्पफुल है कि एट द एंड हम सभी को प्लेसमेंट चाहिए। तब भी हम्म। मैम तो इंजीनियरिंग में बहुत कम गर्ल्स जाते हैं, इसका कोई रीज़न? गर्ल्स वो ये भी होता है फैमिली की कि जो हमारा नॉर्मली जो मिथ चला आया हुआ है कि बॉयज़ हैं तो उनको इंजीनियर मतलब उनका उनको ही पूरा फैमिली को सपोर्ट करना है सब। बट अब हम अभी जिस टाइम में रह रहे हैं तो उसमें हमें ये भी है कि हमको भी एम्पावर होना है कि एटलीस्ट हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकें। तो इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए कि हम भी क्यों नहीं जा सकते, गूगल में भी क्यों नहीं जा सकते। तो एटलीस्ट हमें अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए। मैम योर व्यूज ऑन डेफिनेटली प्रोग्राम? ये एडवाइस आई गेस सभी लोग जितने भी सेशन में देख रहे हैं सभी के लिए बहुत अच्छी है कि यू शुड पार्टिसिपेट, यू शुड नॉट थिंक कि गूगल इज नॉट मेंट फॉर मी और आई एम नॉट मेंट फॉर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स। इट इज अ रियली इंस्पायरिंग थॉट। नेक्स्ट मैम, हम लोग पूछना चाहेंगे कि जब आप लोगों का इंटर्नशिप टाइम था हुँ। तो उस टाइम के दौरान कौन-सी मिस्टेक्स जो आप हमें सजेस्ट करेंगे कि हमें नहीं करनी चाहिए? लाइक सम मिस्टेक्स, सम कॉमन मिस्टेक्स दैट एवरीबॉडी डज़ बट नॉट एवरीवन फोकसेस। हुँ। अ, इंटर्नशिप के पहले हमें कुछ-कुछ पहले से प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे प्रोजेक्ट रेडी करने होते हैं और कोडिंग अच्छी करनी होती है। हम एट द मोमेंट थर्ड ईयर में आके पैनिक हो जाते हैं कि हमें रिज़्यूमे सेंड करना है, हमारे पास कुछ चीज़ें लिखने के लिए नहीं होती कि हम रिज़्यूमे को किससे फिल करें। तो ये एक एडवाइस है कि आप फुल प्रिपरेशन अपने फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तो मतलब थोड़ा ऐसे प्लान करो कि आपके पास रिज्यूमे में हो प्रोजेक्ट्स लिखने के लिए। आप कुछ स्किल्स डेवलप करो, जैसे वेब स्किल होगी, एंड्रॉयड ऐप स्किल होगी, एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट साइड में आपने किया हुआ हो। ऐसा नहीं हो कि आपने पूरा ब्लैंक, आपको कुछ भी नहीं आता डेवलपमेंट साइड में। प्रोजेक्ट्स आपको रखने ही होंगे। और सेकंड होगा कि आपके कोडिंग स्किल्स पे भी, क्योंकि हर कंपनी पर सबसे पहले कोडिंग ही पूछती है, इसके बाद वो इंटरव्यू होगा तो प्रोजेक्ट्स पूछेंगी। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी इसके लिए होना चाहिए प्रिपेयर कि ये चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। और प्रोजेक्ट्स की बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, वेब, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, ये सब। तो पर एक चीज़ जो मैं सबको बोलूँगी कि वो कंपल्सरी ही करनी ही चाहिए, वो होता है वेब डेवलपमेंट। क्योंकि मोस्टली ना कंपनियों में हैकाथॉन होता है, मतलब कुछ इवेंट, क्योंकि मेरी जो कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, तो उसने मतलब हैकाथॉन करवाया था पहले। तो उन्होंने केवल एक ही ऑप्शन दिया था वेब डेवलपमेंट का, बट मुझे वेब डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं मतलब आती, इतनी नहीं आती थी कि मैं खुद से 2 दिन में प्रोजेक्ट बना सकूँ स्क्रैच से। बस मुझे जो आती थी वो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट आती थी, बट ऐसे तो मेरा मैनेज हो गया कि मैंने एंड्रॉयड ऐप ही बनाया। बट ये मैं बोलूँगी कि आप सभी को भी एटलीस्ट वेब, एंड्रॉयड, पर वेब में भी पहले वेब आपको अच्छे से आनी चाहिए, फिर एंड्रॉयड भी आप सीख सकते हो, उसको एज़ अ ऑप्शनल रखो। वो करते हो तो और अच्छी बात है, बट वेब आपको आनी ही चाहिए। फिर देन मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग ये भी सरप्लस है कि यदि आप इसको ऑप्शनल है, ये करना इंटरेस्ट है तो कर भी सकते हो, नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक एक डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो वेब डेवलपमेंट आपको आनी चाहिए, बैक एंड, फ्रंट एंड, पूरा फुल स्टैक आपको आनी चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप यदि आपको 2 दिन में या 3 दिन में प्रोजेक्ट बनाना हो किस तरह से कोई सी भी एप्लीकेशन, तो आप बना सको। भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं है आगे एक्सप्लोर कि हम वेब में ना जाएँ, पर एटलीस्ट अभी के लिए, क्योंकि हमें अभी हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। हमें कुछ ना कुछ कंपनी को बताना पड़ेगा कि हमें क्या आता है। अभी जो क्या आता है वो हम केवल अपने सीजीपीए से बता सकते हैं और प्रोजेक्ट से बता सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको पहले मेंटेन करना होगा। प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा आपकी जन मैम, क्या इंटर्नशिप की आपका जर्नी भी? कैसी थी? हाँ। एंड क्या Sorry. स्टेजेस एंड स्टेप्स? मैम आपकी इंटर्नशिप की जर्नी कैसी थी? Okay, my internship was in delivery. That is like kind of we had a startup culture over there,
And work culture is very different in like startups to very established and big companies, like we can say. So my internship journey was very, like, I learned a lot during that period. First of all, I would like say to everyone who will be starting with their internships or anything, please have good command on Git commands. I still remember I used, like, when you're making projects alone, like single projects in college, small level projects, you don't require Git as much. No, so I still remember my first day, and they were expecting, अच्छा Git तो इसको आता ही होगा, and they just gave me the link, and you have to do all this by yourself, and it was like, I don't know this stuff how to do. So but eventually people were very good, they helped me out कि कैसे कैसे सब करना है, and धीरे धीरे in the starting you'll feel like कि सब बहुत ज़्यादा है and you know nothing, मतलब कैसे manage होएगा. But धीरे धीरे you'll find people, they'll help you थोड़ा बहुत you'll learn by, like, Google is like present everywhere, तुम कुछ भी सर्च कर सकते हो. तो इनिशियली आपको बहुत थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, आई हैड इट देम ऑल्सो, बट विद टाइम यू विल गेट सेटल्ड एंड यू विल गेट स्टार्ट होल्डिंग ऑफ थिंग्स, मतलब तो How इट विल was बी गुड, the बस इट्स experience of जस्ट. yeah? How was the experience of both of you, in searching for internships? Because these are big companies, so you have to approach them कि आप हमें internship दे दीजिए. उसका आप लोगों ने किस तरीके से किया था? You followed LinkedIn or you emailed the HR team? Actually, in that case, I was very lucky. So, when in starting of the third year, in an IT, few companies came for internship, and out of them, few allowed triple IT as well. So, delivery was second company which allowed triple IT also, and like luckily I got over there, so I didn't have to do that hard work in approaching HRs or doing that stuff. But you can definitely, like, see LinkedIn, you can approach people over there who are currently working in their companies to get you in contact with the HRs, whether there are any internships available or not. So I guess LinkedIn is a very good source to find opportunities for the internships. Hmm. Hmm. Pragati ma'am, how was your experience? हम्म, अ, Like you ये you है कि emailed the. स्टार्टिंग इंटर्नशिप में होती है तो हमें सबसे पहले सर्च करना होता है कि हाँ हमें ऑन कैंपस हमारे पास ऑप्शन बहुत ही कम थे, क्योंकि बहुत कम, आप मान सकते हो कि 20% ही कंपनी हमें अलाउ कर रही थी. तो उस टाइम हमें ये था कि हमने एक टाइप से मान ही लिया था कि अब हमें ऑफ कैंपस ही ट्राई करनी है. तो सबसे मेन सोर्स जैसे कि उसने बताया कि लिंक्डइन होता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, तो उन्हें अप्रोच करो, अपने सीनियर्स से कांटेक्ट करो जितना हो सके, अपनी जो भी लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, कि तुम्हारे पास जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, कुछ भी एक्सेप्शनल कर रहे हो तो उसको पोस्ट करो उसमें, ताकि ये एक टाइप से ये बताता है कि आप एक्टिव हो. तो ये कुछ चीज़ें हमें एक्टिव मतलब करनी चाहिए जब तक कि इंटर्नशिप के लिए. एट द टाइम हमें खुद ही कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, उन्हें नहीं बताना पड़ेगा कि हम स्किल्ड हैं. हैकर रैंक पे एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हैकर रैंक पे मोस्टली टाइम खुद ही कंपनी अपने इवेंट मतलब कंपटीशन करती हैं. Hmm. जिसके थ्रू तो वो तुम्हें हायरिंग करते हैं. हाँ. हाँ, तो हैकर रैंक पे जो मैंने नहीं किया, मतलब उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हैकर रैंक केवल कोडिंग के लिए, बट तुम्हें और भी ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो केवल उनको एक्टिवली सर्च करना होता है कि आप सर्च करो. Yeah, मैंने I would पर like ये to मुझे. add the. हाँ, Yeah, कंटिन्यू Yes, करो. ma'am. so continue. हुँ. और ये भी था, मैंने कोडिंग निंजास का कोर्स लिया हुआ था मशीन लर्निंग का. तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यदि हम मशीन लर्निंग का कोर्स कर रहे थे तो उनका भी ये था कि उनके भी जो कंपनियाँ उनसे रिलेटेड थी, तो वो खुद ही मशीन लर्निंग के लिए आपके पास मतलब अप्रोच कर रही थी. तो ये आप ये एक मैं एडवर्टाइज़ वो नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ कि ये भी एक वे था कि हम वहाँ पर कोई भी कोर्स लेके उसमें स्किल्ड करके भी कंपनियाँ अप्रोच कर सकती हैं. मैम प्रज्ञा मैम. वन मोर थिंग मैम, कई बार जैसे हम लोग ये पहले आपस में प्रज्ञा मैम जब कुछ सीनियर से कहना इंटरेक्ट चाहते हैं. करते हैं, आपस में बात करते हैं,
जो हम मोस्टली चीज़ देखते हैं वो बच्चे पूछते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर लें क्या, हम सेकंड ईयर में भी इंटर्नशिप कर लें, हम थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप कर लें। कई बार मोटिव होता है एक्सपीरियंस गेन करना, कई बार मोटिव होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह से। उस पे आपका क्या हुआ है? क्या हमें पहले अपनी स्किल्स को 2 साल बिल्डअप करके देन वी शुड गो फॉर इंटर्नशिप, या फिर वी शुड लर्न अ स्किल एंड देन यूज़ इंटर्नशिप टू गेट एक्सपीरियंस इन इट? मेरे अकॉर्डिंग यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्राई करना चाहिए, बट ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर से कर रहे हो, एटलीस्ट सेकंड ईयर तक कि फर्स्ट ईयर तक आपका खुद का एक्सपीरियंस हो कि क्या क्या टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि इंटर्नशिप से यही है कि हमें एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, भले वो किसी भी फील्ड में हो, एटलीस्ट आपको एक बार ट्राई करना चाहिए यदि वो अच्छा इंटरेस्ट का है। मतलब यदि आपको वेब वेब डेवलपमेंट में इंटर्नशिप मिल रही है तो गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ट्राई करने से कुछ नहीं होता। बट मोस्टली यही है कि आप 1-2 साल अपनी स्किल्स को बूस्ट करो, फिर देन हुँ। उसका इम्प्लीमेंट करो तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ओके, प्रज्ञा मैम, प्रज्ञा यू मैम वुड आप लाइक टू क्या ऐड कहेंगी? समथिंग? क्या I would like to add point यहाँ पर कि if you have two internship opportunities, one is like paying you better than the other, but you think that कि from the second one you can learn more and it can help you more. So I guess financial point of view is not that important at this stage of your life. So definitely give a chance where you can learn more and gain more experience, because definitely that will help you more in your further life. Okay, okay. Uh, okay, we have a question from our audience. They say, did you get any special benefit in being NIT Kurukshetra campus? Yeah, हाँ, definitely we would say डेफिनेटली। like, because you're all around like such talented people, and there is like environment over there is like that you get to learn a lot of things, like to Hmm. introduction to our, like we used to have our seniors who used to take our competitive programming class, so we were like Okay. introduced to what actually is competitive programming. So I would definitely like say that that campus gave us a lot of things and we learned a lot over Hmm. there. Yes, मैम, एंड मतलब Yes. बेसिकली आप कहना चाहते हैं एक्सपीरियंस इज व्हाट मैटर्स। जो एक्सपीरियंस आपको अपनी कॉलेज लाइफ में मिलता है, अपने सीनियर्स से सीखने को मिलता है। Mhm. ओके, Yeah, but I would also like to say that ki, since currently you guys are like sitting at home, colleges are not opening. So rather than focusing ki आपके पास क्या नहीं है, focus on what you have. Like you don't have to waste your time whole day in the classes, like from 8 a.m. to 4 p.m. You can utilize that time sitting at home and improving your skills. So we were like, we don't want to go to college, we want to learn something, because if you are spending 8 a.m. to 5 a.m. for the classes, then hardly you have left any energy या you can sit डेफिनेटली at यू गेट room, टायर्ड। do competitive programming or improve your skills. So I would definitely want to say that since आप लोगों के पास ये time है, तो utilize it effectively and like use your energy into positive things कि जो आपके पास है उस पर focus करो and use that positively. सो लाइक मैम, व्हेन वी से कि हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए इंटर्नशिप्स का यूज़ करना चाहिए। सो व्हाट डू यू से कि क्या अनपेड इंटर्नशिप्स इफ यू आर बीइंग ऑफर्ड, सो शुड वी टेक अनपेड इंटर्नशिप्स Mm, इन द फर्स्ट 2 years of our college life? if you don't have a paid one, so I'll definitely say take unpaid one, because something is better than nothing. So but definitely try to find something paid, because if you are working hard, you are working for them, so you should be Mhm. rewarded for that. Okay, we have a question Yeah. from our audience. Mhm. Yes, you Like, go on. they're asking, yeah, Pratik, go on. Um, how do we approach company for our off-campus internship? अगर Mhm. कैंपस में अच्छी इंटर्नशिप नहीं आई तो we would like to go on off campus. What I would say on this is ki you don't have to approach companies for that. Like you just have to be active and aware ki companies will definitely post internship opportunities. Like
So you just have to be aware that you don't miss out on any opportunity. Say if we take an example of Goldman Sachs, they have their internship program. Everyone can apply through their website, but you just need to know that what's the time period and how you have to apply, just that. So I would say, rather than like spending most of your energy in like approaching HRs ki hum internship de do, and focus on your skills, focus on your like what you know, focus on your projects, focus on your coding, and be aware कि क्या क्या opportunities हैं internship के लिए. You'll get to know that and just grab one of them. Don't wait for 100 opportunities, just wait for one opportunity and you have to crack that. this is Yes, this ma'am. Oh, should be the approach, I guess. yes, ma'am, Ma'am, so definitely. do we have to focus, मतलब जैसे ये future world is full of AI, so should we focus on machine learning and artificial intelligence कि अच्छा future है उसमें, or still we should do web dev and app dev that simple way? Hmm, what I would suggest is, for the first year you can like focus on web development and app development, something like that. In the second year, you can like explore machine learning and AI stuff along with competitive programming. Like if you can manage both, then you can explore that stuff, but I would rather say focus more on your competitive programming and data So structures. So that is the yeah, base of all the skills. yeah, because machine learning and artificial intelligence are very good. It seems very good in resume, but Yes. currently in like industry level, we don't have much opportunities in that field. Okay, ma'am. Yeah. Ma'am, what was your reaction when you got an offer letter from your dream company? मैम लग तो रहा होगा बादल पर पाँव है Yeah, this is a very मतलब special question. Like, आज हमारा मैं dream वो ऊपर companies है, and you जिसके लिए got इतनी an offer मेहनत letter की from them. यस मैम Yeah, definitely. It's something like your dream comes true, and you're super happy. You scream, you tell your loved ones, "Oh, I've got this opportunity," and it's like kind of you celebrate that, no? So, it was really a special day, and I hope you all also get that moment in your life soon. Okay, so Pragatyam, how was your reaction on getting an offer letter from Microsoft? मुझे माइक्रोसॉफ्ट से तो सच बताऊँ इतनी खुशी नहीं हुई थी। मुझे मेरी प्लेसमेंट पहले हो गई थी अर्बन कंपनी में। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि आई गॉट मुझे कोई भी मतलब बस जॉब चाहिए थी। तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि एटलीस्ट मेरे पास अब अर्बन कंपनी की जॉब लग चुकी है। और तब बहुत मैं मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ था सुबह 11 बजे। नाइट तक मैं वेट कर रही थी कि हाँ, मैं 12 बजे तक देखी। नॉर्मली हमारे यहाँ जो रिज़ल्ट आता है वो मतलब नाइट में आ जाता है 12 से पहले। और मैं 12 बज गई, मैं साढ़े 12 बज गई, मैं बहुत वेट करती रही अब आएगा, नहीं आया। एट द टाइम बस आई वांट टू जस्ट गोइंग फॉर स्लीप और जस्ट उसके 1 सेकंड पहले मेरे पास पॉपअप मैसेज आता है कि जीमेल आता है और आई सी कि हाँ, मेरा हो गया है। वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इतना सरप्राइज़िंग था, बहुत ज़्यादा। रात को 12:30 बजे मैं चिल्ला भी नहीं सकती, सब लोग सो रहे हैं घर पे। बट उस टाइम बहुत ये था कि हाँ, आई वाज़ रियली मैं रोने लग गई थी कि हाँ, बस मुझे मिल चुकी है वो जॉब। और तब से मैंने मोस्टली बोल सकती हूँ कोडिंग करना ही छोड़ दिया था इसके बाद कि आई गॉट मैं जॉब मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। तो बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर इसके बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी में हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही मेल आया कि आपको इंटरेस्ट है क्या? मैंने सोचा मैंने तो कोई कंपनी में अप्लाई नहीं किया इसके बाद क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत बहुत अच्छा पैकेज भी था मेरा अर्बन कंपनी के साथ। तो मैं पहले से ऑलरेडी बहुत खुश थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। बट मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई। और तब मैंने कोडिंग करना भी छोड़ दिया था इसके बाद। तो जनवरी में मेरा इंटरव्यू टेस्ट वगैरह हुए, ठीक-ठीक से जा रहे थे, ठीक है, ओके। बट एट द टाइम फाइनल इंटरव्यू हुआ तो मैं कन्फ्यूज़न में भी थी उस टाइम कि अब मुझे क्या चूज़ करना है। Hmm. बट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट में कल्चर बहुत अच्छा है।
बहुत अच्छा पे भी करती है, और मोस्टली बोले कि ये ऑलरेडी बिल्ट इन एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी। तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी बार बार भी नहीं आती, और मेरे पास ऑलरेडी इतना अच्छा माइक्रोसॉफ्ट का आ रहा है, तो लेट्स गो फॉर इट। तो I तब still remember we had a conversation in college कि you should go for Urban Clap or Microsoft. So I was still eager कि what was like that one point which made you choose कि नहीं Microsoft ही. Okay. So, okay, a question from the audience. They say, how was the interview experience at Microsoft and Goldman Sachs? Like, what was the whole procedure that you went through? Like, it was a three-staged procedure, or just the resume and then shortlisting and then interview? So, what was that like? We can start with Goldman Sachs. It was a multiple stage process. Obviously, off campus is a bit difficult to crack relatively to on campus. We have more number of rounds. So first, initially, it was the engineering campus hire program through which I applied. So we had one round that was like multiple choice questions from all the fields, like computer science, mathematics, and few English related questions, situation Hmm. questions as well, logical reasoning and everything like that. So that was the very first screening round. After that, we had a coding question round that contained like two easy to medium questions, one hard coding question, few questions related to computer science subjects, mathematic questions as well, and also we had a situation question. So after clearing this round as well, then there was the final 1 day round. So on that 1 day, we had three interviews on the same day scheduled. So if you clear the first, then you'll be sent for the second round. If you clear the second, then you'll be sent for the third round. That was like pretty hectic day, and Yeah. everything was online. So you were not like able to get आपका turn कब आने वाला है. Like everybody is anxious whether you're getting into second round or not. So it was, but the good thing was it was all a 1 day process. Then after around I guess 10 to 15 days, we had an result out that whether you were selected or not. Okay, so like in the first, they ask about all the skills like analytical, mathematical, competitive programming, and English, and all of that. Yeah, no, for the first round, we don't have coding questions. It was Okay. Okay, just okay. multiple Okay. choice questions. Like they have a lot of applications since college was not a barrier and it was online. Hmm. So they had to do something like screening To shortlist the to candidates. Hmm. shortlist Hmm. candidates even for the coding round. Okay, okay. Ma'am, what was the level of the Pragati? coding round? Level? At level is like as What I was that? said, we had two questions which were of medium level and one was the hard question. So I mean level was good, so you need to prepare well for that. But it's like you have equal weightage for multiple choice questions as well. I mean the marks or what was the weightage was defined over there, so you have to like attempt smartly. It's not Hmm. just about your Okay. knowledge. Smart attempt of the like Yeah. that round is also very important. Yeah, More questions that Pragati, on it's hard how not was questions. your? necessary that you Yeah. just like cake you are like sitting and just doing that question nahi iske to मेरे को सारे test cases pass करने ही हैं and you are wasting your time, so that's not a good approach to like do that. If okay only Hmm. few test cases are passing, okay, let it be, move to other question, do other things, do multiple choice questions. So you have to attempt very smartly. I mean smart Hmm. attempt is very important. Yeah, and for that, practice is really necessary, right? Yeah, Yeah, practice and definitely. experience is very important. Hmm. Pragati ma'am, how was your experience? मेरा जो फर्स्ट हुआ था वो कोडिंग राउंड हुआ था, तो उसके अंदर हाँ. एक इजी, दो मीडियम और एक हार्ड क्वेश्चन थे, टोटल 4 क्वेश्चन थे। तो उसके बेस पे फिर हमें नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हुआ। इसके बाद मेरा हैकाथॉन वाला राउंड था, तो हमें उसके लिए उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था कि आपको वेबसाइट बनानी है, और उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स Okay. वगैरह दिए थे। तो हमको खुद को ही सोचना था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें,
क्या-क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, मतलब पूरा की मतलब स्टार्टिंग आप बोल सकते हो डिज़ाइनिंग से, तो डिज़ाइन करना फिर उसको खुद ही इम्प्लीमेंट करना। तो उसके लिए उन्होंने एक ही ऑप्शन दिया था वेब डेवलपमेंट, बट मुझे वेब डेवलपमेंट आती नहीं थी, तो मैंने एंड्रॉयड वेब डेवलपमेंट से किया था। फिर इसके बाद हमारा अम, अ, अ, 2 कोडिंग राउंड हुए थे। तो ये कोडिंग राउंड हुए थे, मतलब इंटरव्यू आप कर सकते हो। तो इंटरव्यू में हमें 2 क्वेश्चन पूछे थे हर वक़्त, 2 कोडिंग क्वेश्चन। फिर देन हमारा लास्ट राउंड हुआ था एचआर टाइप का। जनरली सिंपल क्वेश्चंस पूछे थे Hmm. कि हुँ, Like they basically interact with you in interview, right? या हुँ, ओके सो जब इंटरव्यू के बारे में हम लोग बोलते हैं तो वी इमेजिन अ पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स सो डिड द सेम हैपन हुँ। विद यू और इट वाज लाइक सम only the questions were given, you have to solve them and answer them? Like how was the interview experience? एंड हाउ टू मेक अ इंटरव्यू में पर्सनैलिटी गुड, मतलब पर्सनैलिटी भी बहुत मेजर है इंटरव्यू में Like एक। what do पर्सनैलिटी you तो see? मैटर I करती mean, है, बट यदि आप yeah, it matters, but कॉन्फिड at the end, your skill will matter more than Hmm. your personality, हुँ। I would say. Yeah. मेनली जो मैं बोलना चाहूँगी कि कोडिंग कर मतलब जब हमें कोडिंग का क्वेश्चन दिया जाता है, तो हमें उन्हें इंटरव्यूअर को इंटरैक्टिव रखना होता है। तो आप जितना इंटरव्यूअर को इंटरैक्टिव रखोगे, आप उसको आप जो भी हर एक स्टेप कर रहे हो, उससे डिस्कस करो। कभी-कभी इंटरव्यूअर भी हमें सजेशन मतलब गाइड करता है, यदि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मेक इट इंटरैक्टिव, हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसे इंटरैक्टिव बनाना चाहिए। आप अपनी हर एक अप्रोच को शेयर करो, आप क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, खुद ही उसे रन करो एज़ अ एक इनपुट लेके वो, और खुद ही ट्राई करो कि आप उसके कॉर्नर केसेस को ढूँढ पाएँ, जिससे पहले इंटरव्यूअर ढूँढे और बताए हाइलाइट करके। आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उसको हाइलाइट करोगे, तो उन्हें एक ये भी रहेगा कि आप खुद ही अपने सॉल्यूशन कर रहे हो, उसमें बग ढूँढ रहे हो। तो एक टाइप से ये आपको हेल्पफुल होगा। Hmm. Yeah, they will not judge you कि तुम हाँ, you just reached at the correct solution. हुँ, Rather they'll see कि आपने किस process से आप उस solution तक Hmm. पहुंचे. If you हुँ, just एक in one go you will just present a correct solution to them and you will be sure कि हाँ ये तो चल ही जाएगा. You're not even thinking Hmm. of any edge cases or something like that. So they'll definitely think ये तो you have done it already. Okay. So if even if you have done it already, even if you know that question already, just try to present it like that you are solving it and you are trying to find कि किस किस cases में ये चल जाएगा, किस किस में नहीं चलेगा, मतलब just make it look like that at least. हुँ। Hmm. So आप next we have a इसकी question. प्रैक्टिस के लिए आप इसकी हाँ, प्रैक्टिस के लिए अपने दोस्त के साथ ऐसे कोई Yeah, इंटरव्यू नहीं होता कि बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको मतलब एकदम और बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी और बहुत ज़्यादा पैनिक होना है। अपने अपने किसी भी दोस्त के साथ जनरली कोडिंग क्वेश्चन करो। उसके साथ एज़ अ yeah. इंटरव्यूअर करो कि हाँ, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो वो काफ़ी hmm, हेल्पफुल होगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत बार ऐसे प्रैक्टिस की और मुझे लगता है कि वो काफ़ी हेल्पफुल था। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम आती है इंटरव्यू के टाइम पे, तो हमें मतलब डर लगता है, पैनिक होते हैं, तो वो hmm, अपने आप चली जाएगी, क्योंकि वो भी इंटरव्यूअर कोई कोई ज़्यादा मतलब हम उसे बड़ा मतलब ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती। एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ जस्ट आपको अपनी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन को उसे ऐसे समझाना है। आप ये hmm, मान के चल सकते हो इंटरव्यू को कुछ नहीं आता और जस्ट आपको अपने जो भी सॉल्यूशन है उसको डिस्प्ले कर मतलब अपने सॉल्यूशन को बताना है। तो ऐसे Yeah, हर एक छोटी to से छोटी practice. चीज़ आप बताओ उन्हें से। हुँ, Very good approach is कि start like study in groups and अपने friends के साथ have these kind of sessions, kind of mock interview sessions. So you know हुँ, that you know the solution, but you'll get how to explain that solution to another person. No? हुँ, हम्म, okay. So we basically say कि हमें अपने friends को interactive way में उनसे interact करना चाहिए, like if they are the interview and we are giving an interview about the skills we apply for internship. So what are your insights on campus and off campus placements? Mm-hmm. लाइक आप लोग क्या बताना चाहेंगे फॉर ऑन द स्किल्स बैकग्राउंड की स्किल्स को हमें उस टाइप से प्रिपेयर करना चाहिए या फिर वी शुड अलाइन मोर टुवर्ड्स ऑन कैंपस, क्योंकि ऑफ कैंपस के लिए डेफिनेटली
हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है। वी नीड टू सर्च ऑन लिंक्डइन की कौन सी कंपनीज़ हैं मेरे फील्ड की जो ओपनिंग्स हैं जिनके अंदर। I एंड guess व्हाट वाज़ इस योर टाइम पे एक्सपीरियंस इन गेटिंग प्लेसमेंट? we have YouTube influencers itne sare that you don't have to do that hard work. They are already doing that for you and listing out and like creating videos of all the opportunities available. You just have to follow them to get all that updates. So that solves one problem of yours to how to get to know about the off-campus opportunities. uh, if we talk about preparation point of view, there is no difference like that कि हमें ऑन कैंपस के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी है एंड ऑफ कैंपस के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी है. नो, इट्स नथिंग लाइक दैट. You just have to be like, there are very simple few things you just need to do well. Maintain your Cgpa. That will help a lot. Like that is a very first cut-off criteria, especially for on-campus placements. So if you can maintain your good Cgpa, then next comes projects. Okay. uh, you can help out, like approach your seniors what they did in their projects. You can use them and enhance them, make some enhancements to them. Or you can get in touch with your professors, like they'll help. You can get in touch with them, work on them. They might already have some research papers published, and you can talk to them. They can guide you, and you can work in any of the research paper that you can use as a project work of yours. Okay. Also, like in project, you can pick one related to web development or app development or something like that. And second, you can take something of machine learning or data science, something like this. You can keep two projects like this. Then third comes your subjects. You know what are the important subject, like DBMS is one of them, and operating systems is one of them. So there are 2 3 subjects you have to prepare for that, like content. Obviously, Geeks for Geeks, you can refer to like what are the important questions, what are the important topics. Just prepare well them. And then obviously there comes the competitive programming. So for companies to crack questions, medium level competitive programming is like enough. You don't have to have a very pro competitive programmer. If your goal is just want to crack company and get placed, so medium level competitive programming would also help you out. So this is like whole preparation summary. Pragati, you can add Ma'am, more. Pragati. yes, ma'am. या इंटर्नशाला से भी मतलब ऐसे बहुत सारे Yeah. प्लेटफॉर्म अवेलेबल है. इंटर्नशाला पे आप कीजिए, प्रोफाइल बनाइए. और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के तो बहुत लोग अपने रेटिंग मेंशन करते हैं रिज्यूमे में कि हाँ हमने इस रेटिंग पे इतने सारे मतलब कोई भी गूगल कोड फ्रेम होता है, गूगल के स्टार्ट होता है, तो ये सारे इवेंट में एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट कीजिए. और उनकी जो भी रेटिंग आप जितना आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना बढ़ाएगी. तो ये चीज़ें भी बहुत हेल्पफुल होती हैं. भले आप कोडशिप में कोड फोर्स में आपकी कितनी रेटिंग है, आपने कोई भी इवेंट किया था तो उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा. तो ये सारी चीज़ें भी आप एज अ आपके अचीवमेंट में रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं. इससे ये बताएगा कि हाँ, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है. और जैसा कि प्रज्ञा ने बता चुकी है सीजीपीए हमारा बहुत मैटर करती है. बहुत कुछ सब्जेक्ट जो हमें चाहिए ही होते हैं. स्पेसिफिक जो कंपनी होती है जैसे एडोबे होती है वो ओएस के क्वेश्चन पूछती है मेनली. नेटवर्किंग से रिलेटेड आपको आना चाहिए कि एचटीटीपीएस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जैक्टली क्या है. तो वो क्वेश्चन आपको करना चाहिए. आप देख सकते हो कि नॉर्मली जो मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट में यदि जावा भी लिखी हुई है ना, तो जावा के पहले सर्च करो कि क्या-क्या क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, कंपनी में पूछते हैं. तो जस्ट प्रिपेयर फॉर इट. आपने कुछ भी एटलीस्ट ऐसा नहीं हो कि आपने रिज्यूमे में कुछ लिखा हुआ हो और आपको इंटरव्यू पूछ रहा हो और आप एकदम ब्लैंक हो. आपको उसके बारे में एटलीस्ट आपने प्रोजेक्ट में आपने रिज्यूमे में जितना भी लिखा हुआ, जितना एटलीस्ट उसका आपको 100% आना चाहिए. उसके अंदर हर जो भी छोटी से छोटी चीज़, क्योंकि उस टाइम ये मूवमेंट भी बताती है कि आपने फेक लिखा हुआ है या फिर जेन्युइन है. तो Yeah. आपको ये इस पे फोकस करना चाहिए कि आप जो भी लिखो एटलीस्ट ये रखो कि उनको ट्रस्ट हो कि आपने पूरा किया हुआ है. Yeah. Don't try to make it बहुत ज़्यादा ऐसे कि you're writing anything in your resume. Just write those stuff. Either it is less
but write only that stuff which you know well. प्रोजेक्ट भी आप किसी का लिया हुआ या ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ले भी रहे हो तो पहले खुद से इम्प्लीमेंट करो, उसके बारे में खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करो, क्योंकि एट द एंड वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे और घुमा के। ओके, मैम नेक्स्ट हमारे ऑडियंस से बार बार एक क्वेश्चन पॉपअप हो रहा है कि Mm-hmm. इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बेसिक स्किल्स हमें फिफ्थ सेमेस्टर तक आ जानी चाहिए, फुली कंप्लीटली, लाइक उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो। लाइक आप लोगों ने बोला कि सीपी बेसिक है, सीपी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, देन वी शुड गो फॉर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट। सो कुछ ऐसी बेसिक स्किल्स जो आप कहेंगे कि हाँ फिफ्थ सेमेस्टर तक आ जानी चाहिए इफ यू वांट टू गेट प्लेस्ड एट माइक्रोसॉफ्ट और गोल्डमैन सैक्स। वो स्किल हर इंटर्न में काम आए अपनी। हम्म फॉर इंटर्नशिप पॉइंट ऑफ व्यू आई विल से दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको बहुत ही ज़्यादा कोडिंग आती है। मतलब इंटर्नशिप इंटरव्यूज आर रिलेटिवली वेरी इजियर दैन द प्लेसमेंट इंटरव्यूज। दे एक्सपेक्ट मोर कि आपको व्हाट यू हैव रेड अबाउट द subjects are very important for internship interviews, so you should be very good with the subject questions, no? And जो coding questions होते हैं interview में, that are not very hard level, मतलब बहुत हार्ड लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस दे डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ऑल्सो प्रोजेक्ट्स, लाइक प्रोजेक्ट्स इज समथिंग दे विल आस्क यू कि आपने अभी तक अपने कॉलेज में क्या किया है, लाइक व्हाट यू डन। हम्म सो प्रोजेक्ट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटर्नशिप इंटरव्यूज आई वुड से। Ma'am, do you prefer us for joining government jobs or private product like ISRO, DRDO? या What's लाइक your views? सम पीपल से दैट इंजीनियर्स मैं तो इंजीनियरिंग ISRO के जाऊंगा अलावा यार। बाकी सब कुछ अच्छा कर लेते हैं। सो व्हाट डू यू से, लाइक वी शुड बी फोकसिंग ओनली ऑन दीज थिंग्स, या फिर हमें गवर्नमेंट जॉब्स और ऐसी कुछ जो बाकी की फील्ड्स होती हैं, मैनेजमेंट फील्ड और UPSC, there are many सीएस others. डिफेंस सर्विसेज। I would say don't restrict yourself to just you need to go for a private company placement. Don't restrict to that. You have a lot of time. अभी तो बहुत ही ज़्यादा time है explore करने के लिए. I guess this is the only time when you can explore your different options. So keep your options open. You can definitely keep that ISRO and DRDO option open. Study well your subjects because that is through gate, and for gate you need a very good depth knowledge of subjects. So if you have that in mind कि आपको वो वाला option भी open रखना है, तो you from like this day only you have to start preparing for that thing, no? You have to start preparing your subjects well. ऐसे नहीं कि बस ठीक है you are just reading for like passing out semesters. So मतलब get yourself clear and keep your 2 to 3 options and work for them parallelly. Okay, ma'am. ओके, Yeah. Ma'am, सो व्हाट and यू से इज कि हमें ऑप्शंस को हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट रेफरल्स। सो व्हाट इम्पोर्टेंस डज रेफरल हैव इन जॉइनिंग कंपनीज लाइक बिग टेक groups, like we have Microsoft, Google, Goldman Sachs, and numerous other things. So what are your views on referrals? How can I get a referral? How can I approach a person for getting a referral? Mm-hmm. For I don't know about much organizations. It varies for organization to organization. I can talk about Goldman Sachs. They don't accept referrals either for internship or for campus hires. So they keep oh, it like uniform for everyone. There we have a website. Anybody can go and apply for them. We don't on our like a referral portal. We can't refer someone who is recently graduated, or I mean currently in college, or for an internship. So I guess referrals plays a bit more important role after when you have 6 to 7 months of experience. Then you can ask your friends who are working in good companies to refer you over there. Hmm. So like for college graduates, they have like proper drive, which you can say campus hire drive, something like this. Most of the companies do this only for college graduates. Hmm. and ma'am, skills are that thing which make us unique from others. तो मैम कौन सी स्किल्स पे हमें वर्क करना चाहिए? एक तो हो गया सीपी एंड many more skills. Like if I am wanting to get a referral for a tech giant, so what the skill set should I prefer? Like
in a single company, for example, you can take Google, for example. So they have, various branches to work upon. They have designing, they have UI UX, they have programming stuff, they have website stuff. So how do you suggest on approaching people with these different skill sets? Like, should I search it on LinkedIn? Who's the manager at that XYZ company, and then I should talk to him on No, no, LinkedIn? no. I approach for this is every company has their careers page. Go to that careers page, see what are the available opportunities over there. All there is always a unique job ID with every opening. Search for an opening which is suitable to you, which is more suitable to your skill set, and find any person who is currently working in that organization, and just ask him for that particular job ID. Can you refer me with the referral? You don't have to approach any like manager who is specifically working in that like team Hmm. or something like that. Okay, and for Pragati ma'am, what do you suggest? Like, what are your insights on this? आप माइक्रोसॉफ्ट में रेफरल का होता है, तो मतलब यदि आपको कुछ रेफरल चाहिए तो जस्ट मैसेज मी ऑन लिंक्डइन एंड कि प्लीज गिव मी रेफरल, देन आई विल गिव ऑन also share your latest resume and job ID. Okay, ma'am. Hmm. Definitely. And Okay, ma'am, friends are very much important in a college life. मैम, तो आपकी कोई ऐसा दोस्त मैम जिसके साथ आप अपना कॉलेज लाइफ हर वक्त स्पेंड करते थे, क्या आप उनसे अभी भी कनेक्टेड हैं? अपनी कोई हाँ, फ्रेंडशिप लाइफ के बारे में बताइए। फ्रेंडशिप लाइफ के बारे में कि कभी-कभी बहुत टाइम आता है ऐसा कि जब आप बहुत डिप्रेस फील करते हो, तब फ्रेंड्स होते हैं, जब आप भले वो कोडिंग प्रॉब्लम हो या सब्जेक्ट की प्रॉब्लम हो, तो आपके फ्रेंड्स होना चाहिए जो आपको जब आप कि जो आपको थोड़ा सपोर्ट कर सके, मोटिवेट कर सके। कभी भी ऐसा सेपरेट मत रहना कि हाँ, मेरे को बस पढ़ाई-पढ़ाई करना है, कॉलेज में आया हूँ तो प्लेसमेंट चाहिए। मेक अ गुड फ्रेंड और उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मेरे अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी मेरे कॉन्टेक्ट में हैं। पर hmm. क्योंकि फ्रेंड्स आपको चाहिए हैं, आप अपनी लाइफ में जब कुछ भी यदि आपको खुशी हो रही है, यदि आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है, तो कौन होगा जो आपको कांग्रेचुलेशन करेगा? एटलीस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो आपकी खुशी में खुश हो। ऐसे फ्रेंड्स तो लाइफ में किसी भी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा Hmm. इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैम, जैसे कि आपका कैंपस एनआईटी कुरुक्षेत्र था, मैम तो ऐसे आइडेंटिफाई करने में भी दिक्कत होती होगी कि कौन ट्रिपल आईटी का है, किसे में दोस्त बनाऊं, कौन है एनआईटी का है? ऐसे कुछ नहीं था, फ्रेंड्स में ऐसे हाँ, ढूँढना देखा जाता है कि ये एनआईटीएस yes, से दोस्त है, ये ट्रिपल आईटीएस से दोस्त। फ्रेंड्स तो ये मतलब कॉमन जो होते हैं उससे बनते हैं ना कि आप में I क्या guess. कॉमन है Hmm. आपको। Yeah, we've हुँ, never met people who would say no कि ये तो ट्रिपल आईटी क्या है, तो I mean we feel any sort of inferiority or something like that. That जब was आप never. ऑफिस में जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट में अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कॉलेज ही कॉलेज के हैं सारे के सारे, दूसरे कॉलेज के भी, कुछ आईआईटी के भी, कोई ट्रिपल आईटी के भी। बट आप ये डिफरेंस है, हम अब कॉलेज नहीं पूछते, बस एज अ फ्रेंड है कि हमारे टीममेट्स हैं, साथ में Hmm. काम कर रहे हैं जस्ट। तो लाइक मैम, वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, प्लेसमेंट एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है बच्चों में, इसलिए एक और क्वेश्चन आया है कि आप लोग कोई टाइम फ्रेम सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर ईच स्किल यू लर्न? लाइक सीपी इज कंटिन्यूस, वो तो आपको करना ही है, कंटिन्यूसली करना है। लाइक अलॉन्ग विथ सीपी, अगर मान लीजिए मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, सो व्हाट इज द आइडियल टाइम जो आप लोग सजेस्ट करेंगे? लाइक इट इज 6 months और 3 months? because we have courses of like 1 to 3 months on web development. So what is the additional time जो हम अपनी end से उस skill पर लगाएं, जिससे कि हमें maximum output मिल सके regarding that skill? आप मेरे हिसाब से ड्यूरेशन में कीजिए। आप मतलब 6 मंथ में लगातार थोड़ा-थोड़ा मतलब कोडिंग भी कीजिए, थोड़ा-सा प्रोजेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिए। सैटरडे, संडे मोस्टली हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। आधा टाइम कोडिंग पे दीजिए, आधा टाइम प्रोजेक्ट्स पे दीजिए। ऐसा मत कीजिए Hmm. कि हाँ, 1 ही महीने में प्रोजेक्ट हम सीख भी जाएँगे और कंप्लीट भी कर लेंगे। 6 मंथ एक लॉन्ग ड्यूरेशन कीजिए और एक कोई बड़ा-सा मतलब प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। ऐसा नहीं कि हाँ, बस एक वेबसाइट बना दी बस। उसके वेबसाइट भी यदि Hmm. बना रहे हो तो एज़ अ फुल स्टैक बनाइए। फ्रंट एंड होना चाहिए, बैक एंड होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए।
तो उसको करने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है उसको बनाने के लिए। तो मेनली आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के अलावा उसकी जगह आप एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए। ऐसा नहीं होता प्रोजेक्ट्स में आपको 4-5 प्रोजेक्ट्स लिखने हैं। 2 प्रोजेक्ट्स भी लिखिए, बड़े लिखिए और वो ज़्यादा मैटर करता है। तो इसलिए भले आप लंबा टाइम दीजिए 6 मंथ, पर जो भी प्रोजेक्ट्स बनाइए उसमें कुछ होना चाहिए कि हाँ, आपने आपने बहुत सारी चीज़ सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। हुँ। एंड मैम इफ आई चूज अ प्रोजेक्ट और जैसे ही मैंने वेब डेव का प्रोजेक्ट चूज किया, फिर बाद में मैंने ऐप डेव सीखा, अब ऐसा हो गया मैंने वेब डेव भूल गया, मुझे जावास्क्रिप्ट फिर बाद में ऐप भूल गया, तो क्या करूँ मैं? Yeah, this is the problem which many of us feel ये like. इसलिए मोस्ट ऑफ द आई स्टूडेंट्स वुड सजेस्ट कि जस्ट डोंट बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करो एज इन चाहे आप कम चीज़ें करो बट डू देम अच्छे से मतलब इफ यू आर डूइंग लेस थिंग्स बट डू देम वेरी नाइसली बिकॉज एट द एंड इंटरव्यू विल नॉट सी कि आपने 4 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं तो वो आपसे चारों प्रोजेक्ट्स से क्वेश्चन पूछेगा if there will be 2 projects he'll pick up one project and like ask everything about that like you should know in depth knowledge of that particular thing so rather than exploring he wouldn't like reward you for saying कि आपने 4 projects 4 different fields में बनाए हुए हैं rather than he'll expect कि आपने चाहे एक ही field में एक project बनाया हो but you know everything about that project so rather than like adding variety and quality to your Okay. resume. So इससे एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है लाइक यू नो व्हेन वी एंटर कॉलेज we have seniors working in different aspects like we have a team working in web development, some are good in android development, some are good in ml ai. So as a student मुझे बहुत confusion feel होता है, even हर किसी को होता होगा like what is your field, आपको कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो डिसाइड करने के लिए आप लोगों ने क्या किया था लाइक व्हाट सजेशन आप हाय हम लोगों को एवरीवन, देंगे? सभी को ट्राई करो मेरे हिसाब से, क्योंकि अब आप अभी इनिशियली में न्यू हो तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब मशीन लर्निंग का नाम बहुत है तो उसी में सीखना है, सभी को सीखो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि हाँ, वेब में क्या होता है, एंड्रॉइड में क्या होता है, मशीन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है। जितना आप एटलीस्ट न्यू टेक्नोलॉजी को सीखो कि हाँ, ये कैसे वर्क करती है, देन आपका डिसीजन आता है आप सीखने के बाद कि आपको कौन सी फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे कभी मत सोचो कि हाँ, नहीं एंड्रॉइड मुझे डिफिकल्ट लग रही है, एंड्रॉइड को तो नहीं ही करना है। नॉलेज हमें सबका लेना है, एट द एंड जो होगा वो बाद में डिसाइड करना है, क्योंकि कंपनी में आप Yeah. ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे तो केवल एंड्रॉइड का ही काम दो। जो काम आपको मिल रहेगा वो आपको करना होगा, तो इसलिए बी प्रिपेयर फॉर सबके लिए। फिर यदि आपका इंटरेस्ट है थोड़ा काम करने के बाद तो आपने स्विच कर लो, एसीटी में चले जाओ जहाँ पर एक पर्टिकुलर फील्ड में यूज हो रही है टेक। Ma'am, we have a question from audience. What is the need of CP or DSA in development? कोई काम पड़ता है डेवलपमेंट में CP और DSA? I would like to take that up. Development with there is no use of CP and DSA. It's just a exercise. It's just an exercise to make your brain working. When you will be like working for a company, वहाँ पे आपको development ही करना है. There will be no CP. आपको कोई CP use नहीं होगा. But how it will help you that if there is a problem and उसके like 2 solutions हैं. But you have done your CP, you have your DSA strong. You can present a third solution which will be better than those two. So this is how it helps, like it helps your brain working rather than actual work in development. So just keep hands on it. It is usually very good, like for it'll help you somewhere in your work also. We say that there is no use, iska to kuch use nahi hota, but then sometime when you will be working for an organization, you will be in a situation जहाँ पे you have to solve some problem and you have to see कि what best solution you can provide, what faster solution you can provide, then there that CP and DSA logic skills will help you over there. Okay, ma'am. So now we have a question related to online classes. हमारी ऑडियंस से जानना चाह रहे हैं कि is there any difference in CGPA criteria of companies जो क्योंकि आप लोग ऐसे आपने ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों देखा है,
So is there any difference of CGPA criteria of companies when we apply through offline or online medium of classes? वैसे तो आपको नॉर्मली जो हम प्रिफर करेंगे कि 8.5 से हमेशा आप होना चाहिए। बिलीव वो फिर आप ऑनलाइन के लिए कर रहे हो ऑफ कैंपस या फिर किसी के लिए भी कर रहे हो। 8.5 से हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि इससे अप हो। इससे Hmm. बिलो तो कोई भी फायदा नहीं है। ऑन कैंपस में भी बहुत सारी कंपनियां रेस्ट्रिक्शन लगाती हैं कि आपके इतने सीजीपीए होने चाहिए। तो आई थिंक मेरी कोशिश ये आपका होना चाहिए कि आपको 8.5 से ऊपर लाना है, क्योंकि वो सभी में क्राइटेरिया रहता है, ऑन कैंपस में भी और ऑफ कैंपस में भी। See, Hmm. I would like to how CGPA will help you. There are 100 applicants. Like currently, say suppose you are your batch only, you have 100 students, and companies have only time to take interviews. They have only resources to uh, take in process only 50 students. So what is the criteria? They'll for at the very first step they'll select. So that is the CGPA. they'll ultimately remove you 50 लोगों को वो ऐसे ही हटा देंगे because they don't have resources and time to interview Hmm. all the 100 students. So that is where CGPA comes into picture. That will not have any impression on your interviewer कि you have like 9.8 CGPA तो he'll see ये तो बहुत intelligent है. No, nothing like that. Hmm. But it's just we have limited resources and but students and applicants are in very huge number. So Hmm. that comes as a very first criteria to filter out people. Yeah, So that is right, true for yeah. ऑन कैंपस लाइक लेकिन जब मैं ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहा हूँ सो फॉर दैट केस आल्सो 8.5 इज यू नो a nice criteria or should I try to put it up to 9 or 9.2? No, I guess 8.5 what Pragati mentioned is a decent Hmm. CGP and that should work. Okay, so like in हाँ, online or whether you are going offline, you need a decent CGPA like 8.5 and above to just get sort of filtered out in the interview process. Yeah, I हाँ, mean, it will provide you an edge since you are in first or second year only, and you just have to make a few extra effort to reach to that CGPA. So, rather than saying CGPA doesn't matter, I will definitely motivate you to do that little extra effort and maintain your Hmm. CGPA. मैम, do language as a barrier when you come for an interview? कि मतलब इंग्लिश तो आती नहीं है, तो कैसे करेगा? ऐसे? नहीं, Mm, ऐसे कोई बैरियर नहीं होता। आपका जो मैटर करता है वो स्किल्स मैटर करती है। यदि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर Hmm. वाली फील्ड में जाएँ, यदि आप कुछ पीएम वगैरह इसमें मैनेजमेंट वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो वहाँ ज़रूर कम्युनिकेशन स्किल्स की मैटर होती है। बट नॉर्मली यदि आप केबल टेक साइड जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर केबल पर आपको आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो होते हैं। ये आपको क्योंकि आपके बेसिक कम्युनिकेशन यदि आपको अपने थॉट्स किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए तो आपको आनी ही चाहिए। Hmm. बट एट द नॉट एट द एडवांस लेवल बट एट कम से कम बेसिक्स लेवल पे तो आपको आना चाहिए। yeah, if not like in interview, but it'll definitely help you in an organization to grow हुँ, more. हुँ। So Okay, if so you feel next like question. Mhm. Uh, yes, ma'am, you can complete. Yeah, so madam, I will definitely say if you feel like you can improve your communication skills, you have time to invest in that, हुँ, definitely do that. Okay, Okay, ma'am. now we have a question for Pragya Jain ma'am regarding to your role at Goldman Sachs. So the हुँ। audience wanted to know what kind of job profile do you have as an engineering analyst in Goldman Sachs? Yeah, okay. Actually, being a fintech firm, they don't give roles as software development engineer, SD1, SD2. We have Hmm. rather than we have like analyst, associate, and vice president roles. So I have a role as software development engineer only. Just the title is different. In fintech firms we have different engineering department, so I am a part of private wealth management division where I work on a website they have with the for a very high profile clients for managing their wealth.
So we work on currently, we have a microservice architecture. Services are on Spring Boot. We Hmm. use Mongo database. So initially, I also had very like many doubts, like what kind of work I'll be doing since they provide as an Hmm. analyst. I'll be doing development, I'll be doing coding or not, or they'll be giving me some data to analyze or something like that. But it is nothing like that. So I'm working on Java, Spring Boot, MongoDB. These are the technologies on which I'm working. It may vary department to department. So like if you are applying specifically for any role, do check what are the requirements for that role. Hmm. Ma'am, do you prefer books or YouTube channels as or clearing your concepts? Mm, if I had no idea about that topic, like literally no idea, then I will definitely go for a video. It'll give me some idea what it actually is. Then I'll go for a book to read. That will, because you can't rely on content which YouTube is providing. Many times I've seen that people which are giving like game content on YouTube, it Hmm. is slightly not authentic, we can say. So if you don't have idea, literally no idea, get some idea through videos, get like brief what is the actual concept, and then go for reading an article or a book, whatever you prefer. Hmm. Hmm. The next question is for Pragati, ma'am. How is your experience of working in Microsoft? That is, that is kind of a purely software-oriented firm. Like it has other products to like cloud and other things. But what is your role in the company? या वहाँ पर हम क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉजिक एप्स, कंटेनर, कुबरनेटीज। तो इन्हीं के रिलेटेड हम अभी सी शार्प टेक्नोलॉजी, सी शार्प डॉट नेट का यूज़ कर रहे हैं। मतलब हम एज एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो और भी जो हमारे कस्टमर हैं उसे यूज़ कर पाए, और वो उनके टेस्ट वगैरह जो भी उन्हें यदि अपना कोड की टेस्टिंग करनी हो तो वो उससे कर सकते हैं। तो मेनली Hmm. जो हमारा है वो क्लाउड टेक्नोलॉजीज पे है और सी शार्प और डॉट नेट पे। Okay, so आप लोगों की जो teams है like you all focus on the same goal, because आप दोनों की companies में they are big name companies, so they have a variety of services being provided to consumers and businesses. So आप लोगों की जो team है they focus on the main issue, like they create new things or they try to manage old things, or you are given a goal each month to just follow the and accomplish the goal. I guess managing old things and creating new things both go hand in hand. Hmm. Obviously, what you have already created, you have to manage that as well. Hmm. And since time are changing, requirements are always new requirements are always up there. So there is something new which is being developed always in process. Okay, And ma'am, okay. should we enhance our leadership skills? मैम क्या आपने वर्क किया था अपने लीडरशिप स्किल्स में? Like Yeah. how do we develop these skills? आप किसी क्लब में जॉइन हो सकते हो यदि आपको करना है बहुत सारी स्किल्स, क्योंकि क्लब में हम बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। नंबर वन कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको वहाँ पर लीडरशिप स्किल्स वगैरह। तो आई थिंक यदि आपको कुछ कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करना है तो आप किसी क्लब में जा सकते हो। मुझे था कि मुझे अपनी कम्युनिकेशन इस स्किल्स पर वर्क करना था, इसलिए मैं अपने एक्टिंग को चूज़ किया था मैंने। आप भी आप जो भी आप समझ रहे हो कि आपके स्किल्स जिसमें वीक हो, इंग्लिश लिटरेचर का भी होता है, हिंदी लिटरेचर का Hmm. भी होता है ग्रुप्स, आप उसे जॉइन कर सकते हो। Okay, so we have covered that question by Vrishav Gar from our audience. Next, this is what are the standard skill sets required to crack tech giants? Like overall, what skills to master up to 6 semester for full-fledged placement-ready person? So they are asking for that complete, complete package that a company will just come and they'll say, yes, this is the package we want. This is the student of having all the skills. So like you except for CP, web development, and all other things, what other skills should one pursue? Like should you focus on your leadership skills,
should you join some clubs to enhance other skills like Pronunciation skills, are there any poetry other skills. skills, post scholastic skills basically? मेरे अकॉर्डिंग तो ओनली स्किल्स जो मैटर करती है वो होती है सीपी, यदि आपको Hmm. अच्छे से अच्छी कंपनी में जाना होता है तो। क्योंकि मोस्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो केवल सीपी पे ज़्यादा फोकस करती है कि आपकी सीपी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उसके लिए लीड कोड, कोड फोर्स, कोड शेप इन पे कोडिंग की गई। अकॉर्डिंग टू मी सीपी इज इनफ। यदि आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं भी है, फिर थोड़ी बहुत भी है, तो सीपी ही एक ऐसे स्किल्स है जो आपको मतलब अभी के लिए जस्ट 4 ईयर के बाद प्लेसमेंट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यदि आप सॉफ्टवेयर CSIT फील्ड में जाना चाहते हो तो। Hmm. एंड आई वुड ऐड कि सब्जेक्ट्स ऑल्सो, मतलब इट्स नॉट, मतलब थोड़ा आप सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करो। लाइक मेनी पीपल जस्ट फोकस ऑन देयर सीपी एंड दे आर एबल टू सॉल्व कोडिंग क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, बट दे आर नॉट able to answer a very basic question, operate very basic operating system question also. So just like focus bit on subjects as well, uh, Hmm. apart from CP. Extracurricular activities which you are talking about, I mean they won't play any role in much role in your interview, because interview can't judge you on your extracurricular as well in that short span of time, but it will definitely help you in life, so do that also. Hmm. And one more thing, someone from audience, Mr. Dipankar Yadav wants to know, is there something like a good amount of rating that you should have on CP websites? Like you should be in top 10%, or like on CodeShip, for example, you have 2000 plus or 2500 plus. So do companies focus on these ratings in your resume or not? रेटिंग्स तो मतलब प्रैक्टिस करने से आती है। तो यदि Hmm. आप ऑब्वियसली वो मैटर करती है, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उसका मतलब यही होता है कि आपने बहुत अच्छी कोडिंग की हुई है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेक रेटिंग करते हैं। तो मेन जो उनका क्राइटेरिया होता है वो इससे बस ये कर सकते हैं कि हाँ आपको आती है। जो वो मेन टेस्ट करेंगे उसका वो कोडिंग के क्वेश्चन आपको देंगे, तब आप कितना कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो कोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए कि हाँ आप उसको कर सके हो, मतलब कर सकते हो, तो लीड कोड अभी के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके आप 500 से ज़्यादा मतलब जितने भी मैक्सिमम आप क्वेश्चन उसके लगा सकते हो, जस्ट लगाओ। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म होता है इंटरव्यू बिट। तो यदि आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली है तो इंटरव्यू बिट पे भी बहुत अच्छा है कि आप वहाँ पर आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको इसके अलावा भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी मिलते हैं शायद, और भी यहाँ पर कोडिंग के स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं कंपनी वाइज और हर एक टॉपिक वाइज। तो आपको मेनली तो इंटरव्यू बीट पे यदि जब आप फुल्ली प्रिपेयर हो चुके हो तो एक बार उसको आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कितना दे रहे हो। Hmm. तो सीपी Also में I ये है would कि आपको, हाँ कंटिन्यू। नहीं, speak. नहीं तो Okay, ये I है कि would say मतलब also I would suggest ki apart from this, if you are preparing in your like preparation phase for the interviews, do read interview experiences on Geeks for Geeks. You will have like plenty of experiences available, so just take up like 5 or 10 minutes out of your day and do give a Hmm. read to one interview or two interview experience. It will give you a better like opinion that what you need to focus more and what kind of questions and what your preparation strategy should be. Hmm. मैम विच मिस्टेक्स यू डोंट वांट अस टू कि हम वो करें मिस्टेक्स अपने कॉलेज लाइफ में जो आपने किए Like और जो अभी रिग्रेट आपने होता है की हो ऐसी मिस्टेक, लाइक बीइंग कि नोटोरियस हम इन ना करें। क्लास, या आपने कभी क्लास को बंक किया हो? Bunk to we used to have like बंक mutual कोई गलती bunks. नहीं है, मतलब ये कोई मिस्टेक नहीं है कि आपने बंक किया तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, पूरा एक दिन कर चली, ऐसे कुछ नहीं है। आप करो जितना करो, जितना कर सकते हो उतना बंक करना भी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो यूजलेस होती है। तो Hmm. कर भी Pragati, सकती हो। although Pragati used to attend all the classes. या And now she is giving the bunk again. I mean mistake तो ऐसा I would not suggest कि ऐसा कुछ mistake है, but Hmm. I would rather say don't be afraid of
making mistakes. Make mistakes, you learn, definitely learn from them. So That's a great suggestion for all. yeah. One more thing, ma'am. Okay, so what a question from our audience: algo trading requirements in Goldman Sachs and tier related partiality. Oh, that contains a lot of technical words. I don't know meaning of even half of them. No, there is no algo trading requirements required because they are not expecting you to do any financial work on them. They have people hired who must know algo trading algorithms and those kind of work. So they're like hiring you for software development. So you need those skills only, and they expect you to do that kind of work only. uh, I would say, like, since the COVID time is Corona, and we have seen that everything is being done online and all this is happening. So fintech firms are like also now moving on to their online platforms. Say, suppose I would give an example over here. Earlier, what we used to have in our department, that clients used to sign the forms physically. We have like a representative who used to go to visit a client and get the forms signed by them physically. But since there is lockdown and all this, so currently we are building the platform where we can do all this work online, like online signature, authentication of those signatures, and all that work. So there is no algo trading algorithms required. And tire partiality is something I don't want to comment. I can't comment on that. That is like companies and organizations' choice. So Hmm. So next, this is a very off topic question, but still, काफी बार ऐसा होता है कि when you joined a company that is related to fintech, क्या अभी आपके hmm. साथ ऐसा हुआ है कभी कि somebody comes to you, like some relative or friend, somebody comes to you and they ask you कौन से stocks में पैसा लगाना चाहिए? Yeah, it happens. Like, people say, "Up, you're working there, give us tips," and all that stuff. But like, our work is very different. What we are doing over there is very different from that. So I just say I can't give you any more tips over there. So it's like that only. And for Pragati ma'am, the same off topic question, like कभी आपके साथ ऐसा होता है, like when you joined Microsoft, so recent Windows 11 update came and somebody calls you, hello Pragati, can you please tell me should I upgrade to Windows 11 or not? No. Okay, कि then you are सबके very बहुत lucky. अलग अलग टीम्स में वर्क कर रहे हुए हैं और इतनी बड़ी कंपनी में हम मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत छोटा मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो हम मतलब वैसा काम कर सकते हैं। हो सकता है जो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो कस्टमर फेसिंग है कि आपको दिख रहा है टीम्स हैं, तो टीम्स में वर्क Hmm. करते हैं, ज़ीरो रहता है, ज़ीरो पे वर्क करते हैं। बट वी आर जस्ट वर्क डिफरेंटली मतलब जो बहुत इनसाइड चीज़ें भी बहुत होती हैं सॉफ्टवेयर में कि ऐसा नहीं कि वेब और ऐप ही होता है। बहुत ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनका कहीं से लेना-देना नहीं होता है वेब और ऐप से। बहुत But सारी still चीज़ें no, इनसाइड there are some notorious friends, some relatives, some छोटे दीदी भैया who come and ask, okay आप Microsoft में काम करते हो, मेरा पीसी नहीं चल रहा है, इस पीसी को ठीक कर दो। एंड क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ। Then you are very lucky because when we tell someone कि I'm doing engineering, so they just come, okay मेरा फ्रिज नहीं चल रहा, जरा उसे ठीक कर दो, मेरा हाँ, पंखा नहीं चल रहा, उसे हाँ। ठीक कर दो। हाँ, it, मुझे it इससे happens याद a lot. आया, मेरी एक फ्रेंड थी, उसके लैपटॉप में कुछ हैक हो गया था, उसकी जीमेल हैक हो गई थी, तो वो कर नहीं पा Hmm. रही थी, तो शी कॉन्टेक्टेड मी कि हाँ, मेरा जो जीमेल है उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं और मैं लॉगिन नहीं कर पा रही, तो आप क्या हेल्प कर सकती हो? मैंने सोचा मुझे तो हैकिंग का एच भी नहीं आता क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट फील्ड होती हैं कुछ-कुछ जिसके बारे में आपको नहीं पता होता। तो जो हम कर सकते हैं वो है गूगलिंग। जिसमें हमें हमेशा एक्सपर्ट होना चाहिए। हुँ, Definitely, definitely, ma'am. That is one skill every engineer should know. Like, इंजीनियर शुड you know, हाँ, डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है कि जैसा अभी आपने बताया कि डिफरेंट स्किल्स सीपी है, काफ़ी काफ़ी सारी स्किल्स हैं।
So we should prefer doing them in groups, but sometimes कोई ऐसा error आ जाता है जिसके बारे में we have to Google. So is there any authentic source of information that we can use, that you used in your times? Like आपको भी कोई ना कोई problem जरूर आई होगी CP करते time, like some concept that is used जिसके बारे में आपको नहीं पता. So how did you go forward? Like you searched it on YouTube or Stack Overflow? पहले वहाँ पर हम सबसे पहले सीनियर्स की हेल्प लेते थे, जो है वो सीनियर है जो भी. हमें एक बार उबंटू को उबंटू इंस्टॉल करना था लैपटॉप पे, और हमें पार्टीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होने वाला है. तो हम पहले सीनियर्स के पास ही जाते थे कि आप इसे सॉल्व कर दीजिए. इसके बाद गूगलिंग होता था. Okay, okay. We have a Also question from for our. like competitive programming, if you're not able to solve some particular question, or you won't find that on Google, especially if there is some question on Code Forces kind of platform or something like that. So do follow like good people who know their coding is good or something like that, and go and try to find what they have implemented as their solution. Even also, this is like, if you have done your solution, you have passed all the test cases, go and find their solution, what they have implemented. They'll give that will give you a new perspective, new thing, that what better you could have done, or your solution is better than them. So do this as a Yeah, practice. and we have another question coming up from the audience. They wanted to ask what type of project one should do on DevOps, like when we are developing our skills in developer DevOps. So कौन से type के projects हैं जो हमें करने चाहिए, या we should learn from others? जो मैंने कहा था कि वेब डेवलपमेंट हमको आनी ही चाहिए, तो वो एक है कि आपको ये कंपलसरी रिक्वायर्ड आप मान सकते हो. बाकी इसके अलावा जो ऑप्शनल है वो में मशीन लर्निंग हो सकती है, ब्लॉकचेन हो सकती है, या एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो सकती है. तो और आप इसके अलावा जीसॉक के भी प्रोजेक्ट होते हैं. आप ट्राई कीजिए कि आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी पार्टिसिपेट करें. ग्रुप्स में आप सर्च कीजिए कि हाँ जीसॉक के भी कौन कौन से हैं. केगल पे भी बहुत सारे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यदि आपका इंटरेस्ट है तो. हाँ, Yeah, आपका like जीसॉक में हुआ था. आपका नहीं, जीसॉक मैंने जीसॉक में नहीं दिया. बट हाँ, ये है कि हम उस टाइम पे ये भी था कि हमें पता भी नहीं था इतना आइडिया, yeah, बट जो भी हमारे yeah. सीनियर्स ने बताया, मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप देखो, एटलीस्ट ट्राई करो एट फर्स्ट टाइम कि क्या होता है. Yeah, you'll find a lot of people on LinkedIn जिन्होंने GSOC क्रैक किया होगा, तो just like try to get in touch with them and know उन्होंने क्या procedure follow किया था. That is really something good which you can that will be a very good edge in your resume also, and learning point of view also, and financially to definitely. Okay. Okay. Now, ma'am, we come to the end of the session, and at last, हम आपसे एक गेम खेलने की रिक्वेस्ट करेंगे. Like we used it on our Instagram page. Okay. This is the contest we hosted on our Instagram page. Wherein we asked the participants to guess the company by looking at their headquarters. So let's get it started. Okay. So what do you think? Which company's headquarter is this? I guess this Okay. quiz should be for the audience, not for the guests. माइक्रोसॉफ्ट या Okay, definitely, definitely. It is Microsoft's headquarters. Pragati ma'am, recognize it very well. Okay, so audience, we hosted the quiz on the Instagram, and herein you have answers directly from the people working from there. And Pragati, tell me okay. honestly, you recognized it from the picture or the number blanks at the bottom? Okay, दिस I guess मस्ट this बी अ is not a गोल्डमैन. tough part. I Flipkart. guess this question is not a tough part. Can you recognize the headquarters? Which company's headquarters are these? Twitter. Okay.
Okay. Looks like our guests are very busy in working at their companies. They have forgot to shop online. This is the headquarters of Flipkart, and this is the logo of Flipkart that is visible over there. Can't I Yeah, pet it? yeah. Look at Okay, the next one. Any ideas? Um, Tower This is Goldman Research. the Sachs, toughest I part. guess. Okay, Goldman yes, Sachs. it is Bingo. Right Goldman answer. Sachs headquarters. You recognize it very well. Okay, the last part. This beautiful room. Any guesses? Any hints? Um, okay, this company's name involves the word research. Research Tower. Yeah. Yes, it is Tower Tower Research Research. Tower Capital. Research. Yes, Tower Research. Research. yes. It is Tower Tower Research. Research Capital's headquarters. Yeah. Okay, so we can end our session here only. थैंक्स फॉर जॉइनिंग इट वाज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन आप लोगों की तरफ से बहुत कुछ सीखने को मिला एंड आई विल नाउ इनवाइट प्रतीक गुप्ता टू जस्ट गिव अ थैंक यू नोट एंडिंग एंड करने का तो मजा ही नहीं आ रहा लग रहा है कि बातें ही करते रहे ओके सो दिस इज our future roadmap. So we start with the entrepreneurship in March, and we followed with leadership placement. And what's next? We are going to hold many events next in May, June. Our audience can suggest. So our main motive of this event कि you realize that कि हमें एक रेस में है जिसमें सिर्फ खरगोश जीतता है. So we have to buck up a lot and work on our skills. And each one of dream कि I need to be placed like प्रगति मैम, like प्रज्ञा मैम, और मेरा भी इंटरव्यू हो टॉक विद एलुमनाई में नेक्स्ट मेरी बारी होगी. So we are to the end. So but everything starts has to be end. We are highly obliged that you decided to spend your weekend with us and guide us about college and its fun. We would also like to thank our audience as their presence is like bina chai patti ki chai. And most importantly, the whole ESL team, which makes this great event a huge success. So, guys, we are all for today. See you again in our next exciting event. Stay tuned with ESL Triple IT Sonipat and do follow our page for latest updates. So, thank you, everyone. Thank you थैंक for यू Bye bye. inviting us here. Yes, we will. थैंक यू मैम फॉर Bye. Thank you, गिविंग ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू